So today I will be teaching you 5 intermediate English words that you can use easily in your daily life communication. Trust me. आपको जब ये words पता चलेंगे तो आपको लगेगा अरे ये words को use करने का क्या फायदा है, whether the people will be able to understand these words or not. But let me tell you, definitely, because these are like the most usable intermediate words. I don't know whether you are using these words or not. If you are not using, so let me tell you, this is the high time you should start using these words, and it will just take 5 minutes to tell you these 5 words. Yes, only 5 minutes में हम ये वाले सारे words करेंगे. So before diving into this video, hello everyone, my name is Dr. Shruti Soni, your corporate communication coach who is on the mission to make you a confident English speaker and definitely to make you a better personality. So if you're new to this channel, then I request you that do subscribe to this channel, like, share and comment जरूर करिएगा and share this video with the people who really want to elevate their English and communication skills. And let me tell you, recently I'm on the mission to make raw videos because I really want you people to see that how real communication looks like ये one go में video होने वाला है. There would be cuts but minimum cuts होंगे. Just I really want to have a conversation, जैसे one to one conversation हम करते हैं ना, इसी टाइप का मैं वीडियो ये रखने वाली हूँ. So currently I'm on this mission, so definitely I do have my notes, I do have my laptops because cuts नहीं होंगे ना, edited video नहीं होगी. So definitely I need my keywords in front of me. So let's get started with this video and how I'm going to teach this video. मैं आपको पहले scenario बताऊंगी, उस words related एक scenario बताऊंगी, that then it will be very easy for you to understand the word and definitely आपके लिए इसको use करना काफी easy होगा. Okay, so let's get started with the first word. So the first word is, and this is the scenario. For example, there's always somebody. हमारी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है, whether that person is in your family or in your friend circle, who always discourage you, who always says that you are not ready for this, you cannot do it, it will take a lot of time. Okay, I don't believe that whether you will be able to do it or not. You need to work really hard if you really want to achieve. So वो क्या करते हैं, आपको every time वो आपको कहीं ना कहीं demotivate करते हैं, right? So that you sometimes realize and doubt yourself कि really whether I'm a person who could do this thing or not. So what it does, it actually slowly kill your confidence, right? It actually damage your confidence slowly and gradually, because बार-बार जब आपको कोई इंसान एक बात बोलता जाएगा तो दिमाग में वाली बात बैठती है ना, तो जब बैठती है तो कुछ चीजें आपको, अगर अच्छी बात बोलेंगे तो हम बहुत मोटिवेटेड फील हो करेंगे, अगर वो बुरी बात बोलेंगे तो डेफिनेटली हमारे कॉन्फिडेंस का बैंड बच जाएगा कुल मिला के. ओके, सो व्हाट इट डज, इट डैमेजेस योर कॉन्फिडेंस एंड द वर्ड मीनिंग इज डैमेज. किसी चीज को डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना इज द वर्ड sabotage. Sabotage. Okay, for example, my friends' negative talks always sabotage my confidence. वो हमेशा मेरे confidence को sabotage करता है, damage करता है. Okay, this is the first word. Now moving to the second word. Just imagine कि you are sitting outside the interview room. Okay, आप interview देने गए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, and you are continuous in this process of doubting yourself कि oh my goodness, what if I would forget anything? अगर वो मुझसे कुछ पूछेंगे, what if I do not know anything? What if I'm going to perform really well in the interview or not? So what you are doing, you are feeling nervous, because out of nervous you are talking such a way, you are doing a negative self talk to you. So out of feeling nervous or that anxiety और डर के मारे जो आप इस तरीके के हरकत करते हैं ना, जो हम नर्वस हो जाते हैं तो हम अपने पे डाउट करने लग जाते हैं. So the emotion of being nervous, the emotion of being fearful, that is the word. Okay, जब भी हमें डर लगता है, जब भी हम नर्वस फील करते हैं, तो उसके लिए वर्ड क्या है, apprehensive. Apprehensive. So it means when you get nervous and fearful. For example, she felt apprehensive just before the interview. मतलब इंटरव्यू से जस्ट पहले वो नर्वस फील करी थी. तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको रिप्लेस कर देना है वर्ड, मतलब नर्वस की जगह आपको क्या लिखना है, apprehensive. Instead of saying that she felt nervous, she felt apprehensive. Did you get my point? इसी तरीके से आपको यूज करना है. Now moving to the third word. Okay, third word is, just imagine कि आप अपने or we can take name as well, like रोहित ले लेते हैं. रोहित is a student in a class and who is an average student. Okay, वो average perform करता है, something like that. And one day teacher class में आई and the teacher announced the topper's name and that topper was Rohit. Now Rohit couldn't believe his ears कि उसकी टीचर ने उसका नाम लिया है, and he was just surprised and everyone was surprised कि oh my goodness कि भाई रोहित ने टॉप किया है. So that emotion of surprise. So instead of saying that surprise, आप बोल सकते हैं flabbergasted.
flabbergasted. So the third word is flabbergasted, जिसका मतलब होता है surprised. Okay, so for example, Rohit was flabbergasted when he saw his name on the toppers list. So instead of saying that Rohit was surprised, हमने क्या यूज करा? Rohit was flabbergasted. तो क्या करना? You just need to replace कर देना word को, और कुछ नहीं करना. Okay, easy लग रहा है ना? Okay, let's move to the next word, which is okay, of course मुझे एग्जाम्पल देना पड़ेगा. Just imagine कि you just woke up from a beautiful morning, sorry, and आप बालकनी में गए यार, अपने घर से बाहर गए, you're just looking at the sky and the sky looks so beautiful, like वो पिंक कलर का, ऑरेंज कलर का, ब्लू कलर का मॉर्निंग में हो रखा है, and you just like आप उसको देख रहे तो आपको इतनी शांति मिल रही है, you feel so calm, इतना सुंदर वो सीन लग रहा है. So the emotion is when something looks beautiful, when something looks calm, peaceful, उसके लिए वर्ड है ethereal. Ethereal. So instead of saying, oh my goodness, the sky is looking beautiful, no, the sky looks ethereal. हमने beautiful को किससे replace करा? Ethereal. So if you really want to compliment somebody in terms of कि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, so don't say कि oh you look beautiful. You can say you look ethereal. Okay, so ethereal means something that is beautiful, delicate, and almost unreal. Okay, and we are moving to the last word, which is अगेन एग्जाम्पल बताना पड़ेगा. जस्ट इमेजिन कि हमारे जो फादर हमेशा बोलते रहते कि यू शुड स्टार्ट सेविंग, आपको सेव करना चाहिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म. एंड हमें लगता है कि ठीक है सेव कर लेंगे, क्या जा रहा है, बट एट द लेटर स्टेज यू गॉट टू नो कि यार सेविंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके, तब तो आपको बात समझ में नहीं आई, बट लेटर ऑन यू अंडरस्टैंड. सो द वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या है? अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना. एंड द वर्ड इज कॉम्प्रिहेंड. Comprehend, it simply means understand. Okay, for example, it took me years to comprehend the value of time and money. So it took me years to understand की जगह क्या यूज करा? मैंने सिर्फ comprehend. तो आपको इसी तरीके से वर्ड्स, नए वर्ड्स आप ऐसे यूज करिए, जो पुराने वर्ड्स यूज करते हैं उसको जस्ट रिप्लेस कर दिए न्यू वर्ड से. यू जस्ट लाइक आप इस तरीके से लर्न करें, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. सो यस, दे आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर मोर देन मीनिंग बिकॉज दे टॉक अबाउट योर इमोशंस एंड फीलिंग्स. सो दीज आर द 5 वर्ड्स फ्रॉम माय एंड. लेट मी नो कि कौन सा वर्ड आपका फेवरेट वर्ड रहा है और कितने वर्ड्स आपको ऑलरेडी पता थे. कॉमेंट्स में जरूर बताइए. आई डू हैव अ सरप्राइज फॉर यू. चेक द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैंने वहां पे आपको एक पीडीएफ आपके लिए दे रखी है जहां पे there are 20 words that you can use in your daily life communication along with the meanings and sample examples. Okay, so yes, share your thoughts. How did you like this video? And I'll see you in the next one.